सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। और आज हम अपनी दूसरी लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए डाइपोल, आज हम बात करेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारा डाइपोल हो गया कुछ ऐसा, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमने यहाँ दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस ले लिए, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड लेट अस से दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस कॉल्ड 2a। ठीक है, तो ये हमारा रेडी हो गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब आज हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। सो दिस इज द डाइपोल वी हैव टुडे एंड इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी एक पोजीशन पे हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू दिस डाइपोल। सो लेट अस टेक सम रैंडम पॉइंट ओवर हियर कॉल्ड P। ठीक है, और हमें इस पॉइंट पे पता करना है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करता है, चार्जेस क्रिएट करते हैं। यहां पे हमारे पास कौन कौन से चार्जेस हैं, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही दोनों क्रिएट करेंगे। नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। ठीक है, सो दिस माइनस क्यू चार्ज विल क्रिएट सम इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजिशन। लेट अस से दैट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई E माइनस क्यू, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इट विल बी KQ बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज दिस डिस्टेंस, लेट अस से दिस इज 2a, सो व्हाट इज दिस इज नथिंग बट a, अगेन दिस इज नथिंग बट a. नाउ लेट अस सपोज दैट दिस पोजीशन इज एट r डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल, सो दिस डिस्टेंस इज r. ठीक है, वी आर अज्यूमिंग दैट दिस पोजीशन इज r डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डाइपोल. ठीक है, so this is a and this is r, so how much is this distance, it is nothing but under root of a square plus r square, simple Pythagoras. Similarly again this distance will be nothing but under root of a square plus r square. So charge minus q and charge q both are at a distance under root of a square plus r square from this point. Now it is easier for us to calculate what is the electric field due to minus q and what is the electric field due to plus q at this position. ठीक है, so E minus q will be nothing but KQ by this distance का square, that is a square plus r square. Similarly electric field due to plus q, electric field due to plus q at this position will be KQ by a square plus r square. ठीक है, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एट दिस पोजीशन। अब हमें पता करना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एंड प्लस क्यू एट दिस पोजीशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू विल एक्ट एट दिस पोजीशन इन सम डायरेक्शन, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू विल आल्सो एक्ट एट दिस पोजीशन इन सम डायरेक्शन. नाउ वी नो दैट a negative charge always creates an electric field which acts towards the charge, and electric field by a positive charge always acts away from the charge. So electric field due to minus q at this point will act in this direction. Again electric field due to plus q at this position will act something in this direction. ठीक है, positive charge will create an electric field in the direction away from the charge, so electric field in this direction. This is E plus q. Again electric field created by minus q acts towards the charge, so it will act at this position towards the charge. ठीक है, so this is electric field due to minus q. ठीक है, अब हमें at this position electric field due to plus q and minus q पता है, उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पता है, हमें क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है, वो हम कैसे करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमें सिंपल वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं. वी हैव टू वेक्टोरियली फाइंड आउट व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ठीक है, तो अभी आप एक लॉजिक समझो कि मैंने क्या किया, इसके पैरेलल यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया. ठीक है, I drew one line parallel to this line.
ठीक है, एंड लेट अस सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, ठीक है, द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन इज थीटा. सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइंस थ्योरम, इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, ठीक है. एंड सिंस इन दिस ट्राइंगल this side which is under root of a square plus r square and this side which is also under root of a square plus r square, so this is an isosceles triangle. So if this is theta, this is also theta, ठीक है. सिंपल मैथ्स, हालांकि मुझे ये सब समझाना नहीं चाहिए, बट दिस इज सिंपल मैथ्स विच आई एम गोइंग टू टीच यू, और ये आप खुद भी समझ सकते हो. अगर ये थीटा और ये थीटा है, एंड इफ वी कंसिडर दिस ट्राइंगल, सो दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, this is the exterior angle for these two angles, so this will become 2 theta, this angle will become 2 theta. ये बात आपको समझ में आ रही है? If this is theta and this is theta, so for this triangle, if we consider these two angles, this angle will become exterior angle, so these two will become theta plus theta, 2 theta, so this will become 2 theta, because the sum of these two interior angles will be equal to the exterior angle. If this is 2 theta and this is theta, so how much is this? This is also theta, ठीक है. So the final point is this angle is theta and this angle is also theta, ठीक है. It means electric field due to plus q is making an angle theta with horizontal, and electric field due to minus q is also making an angle theta with horizontal, ठीक है. Now let us suppose if this is theta and this is theta, what is the vertical component of electric field due to plus q? It is eq sin theta. The vertical component of e plus q will be e plus q sin theta. Similarly, the vertical component of e minus q will be e minus q sin theta. अब आप देखो, ये दो वेक्टर्स बिल्कुल ही इक्वल हैं एक दूसरे के, बिकॉज यू नो दैट e प्लस क्यू इज इक्वल टू e माइनस क्यू, ठीक है. सो e प्लस क्यू साइन थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू e माइनस क्यू साइन थीटा. नाउ दिस टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज द वर्टिकल component of e plus q will act in this direction. Similarly, the vertical component of e minus q will act in this direction, ठीक है. So if two vectors which are equal in magnitude and they are acting opposite in direction, so they will cancel out each other, which means that the vertical component of e plus q and e minus q will cancel out each other. That means only the horizontal components of e plus q and e minus q will create the net electric field. So now we are only bothered about the horizontal components of e plus q and e minus q. Now if we consider what is the horizontal component of e plus q, it is e plus q cos theta. Similarly, what is the horizontal component of e minus q? It will be in this direction, which will be e minus q cos theta, ठीक है. I'm sorry, this is e minus q cos theta, ठीक है. So for e plus q, the horizontal component will be e plus q cos theta. Similarly, for e minus q, the horizontal component will be e minus q cos theta, ठीक है. And these two electric fields in horizontal direction will give us the net electric field, because we have seen that the vertical components have already cancelled out each other, ठीक है. So only the horizontal components sum will give us the net electric field due to this point, due to this dipole. So now the net electric field will be nothing but sum of the horizontal components of e plus q and e minus q, which is e plus q cos theta and e minus q cos theta, ठीक है. Now we know what is the value of e minus q and e plus q. We have to find out the value of cos theta, ठीक है. So if you consider this angle, what is cos theta? Cos theta will be nothing but a by under root of a square plus r square, ठीक है. If this is theta, what is cos theta? Cos theta is b by h, so a by under root of a square plus r square, ठीक है. So we have got the value of cos theta.
we know the value of E plus Q and E minus Q from here. So we just have to put these values and find out what is the net electric field. So this will become KQ by A square plus R square into cos theta plus, again E minus Q is KQ by A square plus R square cos theta. So what will this give us? It will give us 2KQ by A square plus R square cos theta. 2KQ by A square plus R square cos theta. And what is cos theta? It is A by A square plus R square. So we can write that A over here and this will become 3 by 2. Is this clear? So if we add these two, you will get 2KQ by A square plus R square cos theta. So 2KQ by A square plus R square, and then what is cos theta? It is nothing but A by A square plus R square ke power 1 by 2, that is A by A square plus R square, total 3 by 2. ठीक है? Now you know that A is very less than R. A is negligible as compared to R. ठीक है? So we can ignore A over here. We can take A as 0. So what will this expression become? E net will become 2KQ A by, this will become 0. So R square to the power 3 by 2 is nothing but R cube. ठीक है? Now again the concept of dipole moment comes back. What is dipole moment? It is given by P is equal to 2A into Q. So we can replace 2A Q by P. So this will become KP by R cube. ठीक है? So net electric field on the perpendicular bisector of a dipole is nothing but E is equal to KP by R cube. ठीक है? So this is the derivation you have. Not much difficult to understand, very easy. I will revise that once again for you all guys. सबसे पहले ये हो गया हमारा डाइपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस कॉल्ड 2a, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसा हो गया. हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे यहां एक पॉइंट लिया, और हमें पता करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पोजीशन ड्यू टू दिस डाइपोल. ठीक है? यहां तक क्लियर है? अब बच्चों हमने कंसिडर किया कि दिस डिस्टेंस इज r. दैट मींस दिस पोजीशन इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम the electric dipole. ठीक है? So if this is R and this is A, so how much is this? Under root of A square plus R square. This distance, that means the charge minus Q is at a distance under root of A square plus R square from this position. Similarly, this distance will also be under root of A square plus R square. So we have got the distance of this position from minus Q and plus Q. This is very clear from here. Now we have to find out electric field, net electric field at this point. So always electric field is produced by charges. What are the charges over here? Minus Q and plus Q. What is the direction of electric field due to minus Q at this position? A negative charge always creates an electric field which is directed towards the charge itself. So electric field will act in this direction towards minus Q. ठीक है? So this is the direction due to electric field due to minus Q. And what is the direction of electric field due to plus Q charge? Due to plus Q charge at this position, it will be in this direction. ठीक है? A positive charge always creates an electric field away from itself, away from the charge. So the direction of electric field will be away from the charge in this direction. ठीक है? This is very much clear. So this is the direction of electric field due to minus Q, and this is the direction of electric field due to plus Q. This is very clear. Now let us do some mathematics over here. Let us consider that this angle is theta, and we drew a parallel line here parallel to this. Parallel to this, we drew one more line over here. So if this is theta, from parallel theorems, this is also theta. ठीक है? And since this is an isosceles triangle, this angle is also theta. By using the theorem of exterior angle, if this is theta and this is theta, this angle will become 2 theta. And since this was already theta, so this will also become theta. Both these angles are theta. Okay? Now for electric field due to plus Q, what is its vertical component? It is nothing but E plus Q sin theta. Now electric field due to minus Q, what is the vertical component? E minus Q sin theta. The direction of
E plus q sin theta and E minus q sin theta are opposite to each other. So both of them will cancel out each other. The vertical components of E plus q and E minus q will cancel out each other. What will be left? Only the horizontal components of E plus q and E minus q, which will be in this direction, and that will only give us the net electric field. इसलिए we find out what is the electric field due to plus q in horizontal direction, which is E plus q cos theta, and electric field due to minus q in horizontal direction, its horizontal component E minus q cos theta. So net electric field will be the sum of these two. E net is equal to E plus q cos theta plus E minus q cos theta. And now we are simply putting the values of E plus q, E minus q and cos theta, and we have solved this mathematically, and we have got net electric field is equal to kp by r cube, where p is nothing but the dipole moment. And what is the direction of this electric field? It is opposite to the direction of electric dipole. ठीक है, आपको पता है what is the direction of electric dipole? Dipole moment. It is from negative to positive charge. So the direction of dipole moment will be negative to positive, but the direction of electric field on the perpendicular bisector of a dipole will be opposite to the direction of dipole moment. So what will be the direction of net electric field? It will be in this direction. ठीक है? So I think this was pretty clear. So अगली क्लास में हम बच्चों डिस्कस करेंगे what is the electric field on a general position from a electric dipole. तो बच्चों यहां पे खत्म होती है हमारी आज की क्लास। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो भी बच्चे नए हैं चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आने वाले वीडियोस और भी यूजफुल होंगे। सी यू सून, थैंक यू।